Okay, now let's read this poem. All the World's a Stage, written by William Shakespeare. William Shakespeare was born in 1564 and died in 1616. This century is called the 16th century, and the 16th century period was famous for Renaissance. This is called Renaissance. At that time, ruling over England, the very famous queen, the name Queen Elizabeth. Okay? क्वीन एलिजाबेथ का पीरियड है, इस पीरियड को रेनेसां कहते हैं. रेनेसेंस भी कुछ पढ़ते हैं, तलफ़ुज़ वो भी सही है लेकिन अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन. ओके, रेनेसां मींस, रेनेसां का मतलब है रीबर्थ. रीबर्थ मींस रीअवेकनिंग, मींस reproductions, means means we can say a rearranging of the things, मतलब चीजों में चेंजेस आना नए तरीके से. रेनेसां एंटर्ड इन यूरोप 14th सेंचुरी. जब 14th सेंचुरी जब यूरोप में आया था, लेकिन लंदन में ये 16th सेंचुरी में था. एंड एट दैट टाइम इट वाज द पीक टाइम इन 16th सेंचुरी ऑफ रेनेसां इन द पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. Why I am telling you this history? Because this history very much related to this poem, All the World's a Stage, William Shakespeare. Because it is very necessary to study about the poet just before studying his poetry. उसकी पोइट्री पढ़ने से पहले शायर का दौर, शायर का सेंस, उस वक्त का पीरियड पढ़ना जरूरी होता है, so that we can understand it at what point and what was the situation at that time the poet wrote that poem. क्यों लिखी, क्या वजह थी. अच्छा, अब एक्चुअली अभी मैं पहले पोएट को डिफाइन कर दूं, then inshallah I'll explain what the poetry is about this. William Shakespeare is also called playwright poet. Playwright poet. Playwright poet, what do you mean by word playwright poet? Playwright poet means playwright spell सही कर लीजिए, WRIGHT. Playwright poet, it means the poet who writes the play in poetic diction. That is called playwright poet. All of the plays of William Shakespeare you will find written in poetic diction. It is सब poetic diction में लिखे हुए हैं. At that time there was no beginning of any prose. Prose की beginning नहीं हुई थी उस वक्त. उस वक्त सिर्फ poetry, और उस वक्त जो उरूज पे थे, जो दो बड़े genre of literature, that is called poetry, P-O-E-T-R-Y, poetry, and second one is plays. Poetry और play जो थे ना बड़े उरूज पर थे. And Queen Elizabeth was a very literate person and she was fond of literature, and that is why this period is called another name the period of literature. English literature का एक दौर कहलाता है. Another information about William Shakespeare. William Shakespeare was also a theatrist and a soldier as well. But above this, he was a universal poet. Universal means William Shakespeare was a universal poet. Can you let me know what is universal? किसने कह दी ना सर? For all over the world, applicable for all the world. जो चीज applicable हो पूरी दुनिया में, इसे कहते हैं universal. Yes, but here about William Shakespeare, I want to say one thing. William Shakespeare did not write by the impressions of the society. William Shakespeare ने माशरे से मुतासिर होकर नहीं लिखा. William Shakespeare affected the society. माशरे को मुतासिर करने के लिए लिखा है. That is why Shakespeare has become a universal poet. इस वजह से Shakespeare एक universal poet कहलाता है. ये वजह है. And I have already told you about the definition of literature. Does anybody know? Yeah, literature is the mirror of the society. So that is why we learn the literature to just learn the society. हम उसको society पढ़ोगे. तो ये William Shakespeare कहते हैं universal poet. Understood? इसी वजह से कि इसने माशरे से मुतासिर होकर नहीं लिखा, बल्कि ऐसा लिखा कि जिससे माशरा मुतासिर हुआ. Do you know about the educations of Shakespeare at the time?
Shakespeare is one of the best writer, especially poet. यानी playwright, बेहतरीन playwright कहलाता है शेक्सपियर. Do you remember why? Anybody else? किसी को पता है? Question क्या था? विलियम शेक्सपियर राइट इन पोएटिक डिक्शन ऑन हिज प्ले. विलियम शेक्सपियर के प्ले पढ़े हमने. किंग लियर, हैमलेट एंड एंटनी क्लियोपेट्रा. आप देखें इनके सारे प्ले पढ़िए, सब पोएटिक डिक्शन में लिखा है. उस वक्त का दौर यही था. विलियम शेक्सपियर के बारे में ये कहा जाता है कि इससे पहले एक पोएट था जिसका नाम था मार्लो. वो भी प्ले राइट था. मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो. क्रिस्टोफर मार्लो के जो प्लेस थे ना बेटे, वेरी फेमस. उसने एक बड़ा बेहतरीन और फेमस प्ले लिखा जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस. डॉक्टर फॉस्टस उसका मोरालिटी प्ले. लेकिन विलियम शेक्सपियर की एजुकेशन पता है, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे. विलियम शेक्सपियर ने इतना अच्छा लिखा कि कहा जाता है कि शेक्सपियर इज द पोएट्स ऑफ पोएट. शायरों का शायर कहा जाता है. तो बताइए क्यों कहते हैं इसको, इसके क्या वजह? पोएट्री जात की नहीं, पोएट्री तो लिखी है इसने. इसकी एजुकेशन कितनी थी ये पूछना चाह रहा हूँ. ओनली 3 क्लास प्राइमरी लेवल, जस्ट नॉट इनफ. रिसर्च की हुई इसमें कि 3 क्लास से ज्यादा इसकी एजुकेशन नहीं मिलती. इट इज गॉड गिफ्टेड एबिलिटी. आपको ये ना समझना कि आप 3 क्लास पढ़ के शेक्सपियर बन जाएंगे. बेटे इट्स ओनली फॉर शेक्सपियर.